Hi, this is Rashmi Mhatre from CSIT department from St. Wilfred College of Arts, Commerce, Science, Panvel. Subject is software project management, and this is lecture 12. Hi guys, we'll learn about time dimensions today. Adding time dimensions on a project means what? Adding a time sequence or adding or inserting a scheduling a time that the project should complete in a proper way, in a proper time with a good quality. So we'll start. The method requires that our each activities we have an estimate on estimates of its duration. Whatever activities we have planned, we have given an estimation on that duration. Next, there are two types. One is one is forward pass and one is backward pass. What happens in forward pass? It will calculate the easiest start or the earliest start date of the activities to calculate the project completion date, where the backward pass calculate the latest or latest start date for activities and identify the critical path from the graph. Now what is going to happen here? The calculator will understand, or this forward pass and the backward pass will understand the procedure, how the project is going to work after it. It will also calculate the date, the edge of data. जो early start है उसको calculate करके मतलब ये करूँगा. ये forward से करा जाए. Backward से हमें चाहते हैं later start activities या हम identify करेंगे critical path and graph वो से कर सकते हैं. Backward adding time dimensions. Time dimensions. And this is something that I have an example. And example specification is activation to activity. Now, but question it takes weeks. After 4 weeks, it's not hard to execute. Percent way. Code take plus 4. File take a right user your week after. That thing is test take me 2 weeks. The example next forward thing in detail. Discuss. See, forward take move forward with network diagram to determine the distribution, finding the path of free object. The rest backward is move backward to the result to calculate latest start to find there is a activities. Network techniques. It will help us to move through enough duration project duration techniques by finding the critical path. By finding the critical path in it. Later we will understand what is critical path also. The free floats of the object. Next, see there is some diagram here. This is start and finish end. Start and finish end, where their task names are given. It can be testing, system testing, analyzing, planning, whatever. The system task is given. Early start, duration, early finish. Late start, slack, late finish. You will find that this whole concept or this whole diagram has same thing. Yes, it has same thing, but it is joined by some actual meaning also. Next is the backward pass. A backward pass in the area of a project management refers to the calculation of the late finish dates and the late start dates for the options for the portions of schedules activities that have not been completed. This is determined by starting at the project schedule end date and working backward through the schedule network logic. See here in diagram I'll tell you. See this is all backward pass. Late start, late finish. SAC has been resolved. But in forward pass, early start, duration, early finish. Planning or designing phase, we can say. Task name is planning or designing phase. Okay. Next is identifying the critical path. There will be at least one path through the network, that is one set of successive activities that defines the duration of the project. This is known as the critical path. Any delay to any activities of this critical path will delay the completion of a project. See, when we are going to identify this critical path, we'll look after that ऐसा कोई तो एक path होगा
जो नेटवर्क थ्रू से पास हो जाएगा, जो ड्यूरेशन ऑफ अ प्रोजेक्ट डिफाइन करेगा, उसी को हम क्रिटिकल पाथ बोलते हैं. What happens here? When any activity get delays in this critical path, the project by default will get delayed. Delay. How? Because activity is not completed, and there is a major rule they have told: if all activity is completed from start till stop, it only make a successful project, or it can only tell that the project is completed. Next is activity flow. Difference between an activity earliest start data and its latest start data is known as the activity float. The difference between an activity's earliest start date and the latest start date is known as activity float, which is measure of how much the start or completion of an activity may be delayed without affecting the end date of the project. अभी इसका सिंपल सेंस मतलब है कि कितने एक्टिविटीज टाइम के बाद खत्म हुए हैं और कितने एक्टिविटीज प्रोसेस में है जो प्रोजेक्ट कंप्लीशन करने में मतलब थोड़ा सा डिले कर रहे हैं, उसको हम बोलेंगे एक्टिविटी फ्लो. नेक्स्ट इज measures of the activity flow. There are numbers of other measures of activity float, including the following. First is free float, the time by which an activity may be delayed without affecting any subsequent activities. It is calculated as a difference between the earliest completion date of other activities and the earliest start date of the succeeding activities. Interfacing float, the difference between the total float and the free float. Now, what is a free float here? जो टाइम लेगा एक्टिविटी डिले करने में लेकिन विदाउट अफेक्टिंग द सब्सिक्वेंट ऑफ एक्टिविटीज, मतलब जो स्मॉल पार्ट्स है उसको मतलब इफेक्ट किए बिना, और इट इज कैलकुलेटेड एज अ डिफरेंस बिटवीन किसमें एक है कंप्लीटेड डेट फॉर द एक्टिविटी एंड द अर्लीस्ट डेट ऑफ द अर्लीस्ट स्टार्ट ऑफ द सक्सीडिंग एक्टिविटीज. मतलब एक एक्टिविटी स्टार्ट होने से पहले और एक एक्टिविटी स्टार्ट होने के बाद. ओके, और इंटरफेसिंग फ्लोट मतलब क्या? डिफरेंस बिटवीन जो टोटल फ्लोट है उसमें और फ्री फ्लोट्स में. नेक्स्ट, shortening the project duration. Now, how can you shorten the schedule? Via reducing scope, quality, adding resources, concurrency, perform tasks in parallel, and substitution of activities. Now you will look after here that जब भी हम कोई प्रोजेक्ट बनाते तो प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन कम करने का हमारे पास ऐसे कोई तरीका होता नहीं है. शॉर्टकट्स हमें लेने भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वी आर टेकिंग शॉर्टकट्स देन प्रोजेक्ट कैन गेट मोर डिले, मोर इश्यूज, मोर एरर्स. सो व्हाट दे हैव टोल्ड, वाया व्हाट वी कैन डू इट, वाया रिड्यूसिंग द स्कोप. दैट मीन्स क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा. अगर शॉर्ट ड्यूरेशन में कंप्लीट करना है तो क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा. जैसा स्टेक होल्डर ने मांगा है वैसा नहीं दे पाएंगे हम लोग. नेक्स्ट इज एडिंग रिसोर्सेस. बहुत सारे रिसोर्सेस ऐड करेंगे, जैसे मैन पावर हो सकता है, टीम मेंबर्स, कॉस्ट, शेड्यूल, प्लानिंग, सब. ओके. कंकरेंसी, परफॉर्मिंग टास्क इन अ पैरेलल वे. मतलब ये टास्क और वो टास्क दोनों एक साथ कंप्लीट करवाना है, दोनों एक्टिविटीज एक साथ कंप्लीट करवाना है. नेक्स्ट इज substitution of activities. Substitution of activities मतलब अगर ये एक्टिविटीज रन हो रही है तो उसका सब्स्टिट्यूशन दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा उसका सब्स्टिट्यूशन क्या होता है उस एक्टिविटीज के बारे में. See, by adding this time dimension, time schedules, time plannings, backward pass, forward pass, we will only understand or will make us understand that कि प्रोजेक्ट को टाइम से खत्म करना है, सारे एक्टिविटीज एट अ टाइम खत्म होने चाहिए. कोई भी एक एक्टिविटी अगर रह गई तो वो बैकवर्ड पास में चला जाएगा. प्रोजेक्ट तो कंप्लीट हो गया लेकिन कोई एक्टिविटी अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है तो वो बैकवर्ड पास में चला जाएगा. सारे एक्टिविटीज स्टार्ट से एंड तक खत्म हो जाए जिसमें ड्यूरेशन में दिखाई दे रहा है तो दैट इज फॉरवर्ड पास में चला जाएगा.
whatever activities is not properly working, या कोई एक्टिविटी अभी भी फ्लोट में है तो उसको एक्टिविटी फ्लोट बोलेंगे। जो टोटल फ्लोट और जो फ्री फ्लोट है उसको हम इंटरफ्रेसिंग फ्लोट बोलेंगे। जो भी प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन है अगर उसको हम शॉर्ट करने का सोचे, कम से कम टाइम में दे, तो हमें क्वालिटी को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज देना पड़ेगा, फिर सोर्सेस बहुत ज्यादा ऐड करने पड़ेंगे, एक टाइम पे दो दो टास्क पैरेलली चलाने पड़ेंगे हमें, और फिर ऊपर से सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्टिविटीज ढूंढना पड़ेगा। इफ दिस एक्टिविटी इज नॉट वर्किंग, अगेन नेक्स्ट कोई दूसरा सब्स्टिट्यूशन लगा के वहां पे यूज करना पड़ेगा। दिस may cost more sometimes, which cannot gives a benefit. Stakeholder तो कभी खुश नहीं होगा because we are compromising the quality actually. तो उनको हमेशा एक थोड़ा सा उनके requirements हम meet नहीं कर पाएंगे, तो there would be some issue with this. Okay. Sorry. Next is identifying the critical activities. Critical path activities are the project tasks that must start and finish on time to ensure that the project ends on schedule. These critical path activities will help us to understand what the project tasks that must start and end in a proper ensure or the even given schedule. A delay in a critical path delivery or the critical path activity will delay completion of project unless the project plan can be adjusted so that succeeded tasks finish more quickly than planned. तो unless इस प्रोजेक्ट को और एडजस्टमेंट करने से बेटर है हम क्या करें, क्रिटिकल पार्ट को थोड़ा ध्यान देकर उसको एक टाइम पे खत्म कर लें। अगर वो डिले हो जाएगा तो अनलेस प्रोजेक्ट भी डिले हो जाएगा। ओके, बिकॉज ऑफ दिस अगर ये डिले ना करे तो हमें क्या करना है, वो जो सस्क्रिप्टेड टास्क होता है जो पहले खत्म हो सकते हैं पहले उनको फिनिश कर ले। आइडेंटिफाइंग द क्रिटिकल पार्ट, क्या करना है, जो प्रोजेक्ट में जो टास्क है स्टार्ट एंड फिनिश ऑन टाइम हो रहा है, इंश्योर कर रहा है दैट प्रोजेक्ट एंड्स ऑन शेड्यूल। नेक्स्ट इज एक्टिविटी ऑन एरो नेटवर्क। इन एन एक्टिविटी ऑन एरो नेटवर्क, activities are represented by the line between the two circles. The first circle represents the start of the activity and is known as the start event. Sometimes it's called I node. The second circle represents the finish of the activity and is known as the finish event. Sometimes it is called as J node. Space is allowed in the circles for calculations results for critical analysis. See here. Start time, finish time, I node, J node. Here floats are given. Activity name, activity duration. If it is a testing, analyzing is going on, what is the duration of analysis is given, then we are going to be finish it. Thank you. We'll see next topics, next lectures.